Hello VBAs, my name is Jivesh Katyal and I welcome you to this latest episode of Talk with the Talent. It's start of a new year. 2024 has brought us a lot of joys and one more joy that we are about to unravel in the next few minutes. The story, the research and the enigma that is the X100 series. I'm thrilled to be joined by a very special guest today. The beautiful mastermind, the most humble guy I have ever met at Vivo India, the product head, Mr. Vikas Tagra. So first of all, a very happy new year to all our VBAs who have tuned to this show right now. I'm really excited as not only I get to talk to my VBA team, but also get to narrate my journey in bringing to life the most powerful X series ever. Well sir, that's what we are here for, to understand the X100 from your perspective. Sure. But sir, before I ask you any sort of question, एक काम करते हैं, क्यों ना अपने VBAs को इस ब्यूटीफुल मास्टरमाइंड प्रोडक्ट की एक छोटी सी झलक दिखा दें. Absolutely. Great, this was amazing. So I have used X90 Pro for about a year, and I thought it is as good as it gets. But sir, tell me, how did you even improve the perfection? उसमें क्या innovation कर दिया? Okay, well, we at Vivo firmly believe that there's always a room to innovate, right? We are a user-oriented company. And during our consumer interactions, we found those insights and then develop and design our products. When it comes to technology, innovation, breakthrough, Vivo is always at the forefront. But इन सब के पीछे इंस्पिरेशन हमें मिलती है कंज्यूमर की नीड से. कंज्यूमर को क्या चाहिए और फिर हम ये टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन लेकर आते हैं. Right sir. So this consumer oriented, user centric, this is something we have heard from time to time at Vivo. तो X100 के पीछे क्या एक बैक स्टोरी है वो कंज्यूमर रिसर्च की, एंड व्हाट आर द सम ऑफ द की इनोवेशंस दैट यू हैव ब्रॉट टू लाइफ इन X100? Sure. So X100 series has lot of things, right, which are unheard, unseen, industry first features. Let me begin with Zeiss Apo telephoto camera. If you compare it with the last generation, X100 series could achieve a breakthrough in telephoto sensor. Now, why did we develop and why did we bring the periscope after so many generations? Again, the answer lies with the consumers, right? So, during interaction with our consumers, we found that they are avid travelers. And when they go all out to explore new things, they want to capture new perspective in their photography. And again, it's coming from consumers. When they want to capture the extremities of the farthest object, they also want to capture the close-up at the same time. That's where we decide to bring this periscope in our X100 series. Yeah, and you will be asking that how is it different from the other periscope camera, right? So this is like X100 Pro is the industry first phone which carries the Apo certified telephoto camera. Now what it does, again consumers want to know and VBA wants to know कि ये करता क्या है. Apo is a very heavy word, right? That's what I was wondering sir, Apo certified. I mean for layman like me, मुझे थोड़ा ऐसे आप बताइए कि how does it benefit the consumer probably? Sure. So normally जो telephoto sensors होते हैं वो chromatic aberrations को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. हमारा Apo सर्टिफिकेशन आ गई है हमारे टेलीफोटो सेंसर में, इसलिए वो अब chromatic aberrations को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है. मतलब क्या हुआ इसका? नॉर्मली पिक्चर्स के अंदर कलर फ्रिंजिंग आती है, एजेस में कलर जो होते हैं वो इंटैक्ट नहीं रहते, पर्पल, ऑरेंजेस, डिफरेंट कलर शेड्स आते हैं. ये एपो सर्टिफिकेशंस उन कलर इन्फ्रिंजिंग को दूर करती है, राइट, एजेस पे स्पेशली. यही नहीं, नॉर्मली जो होता है अगर आप टेलीफोटो सेंसर्स की बात करो वो सेंटर ऑफ द इमेजेस पे फोकस ज़्यादा रखते हैं, वहाँ पे ही क्लैरिटी रहती है. बट क्योंकि हमारा टेलीफोटो कैमरा एपो सर्टिफाइड है, वो सिर्फ सेंटर में ही नहीं बल्कि एजेस पे भी आपको इमेजेस में क्वालिटी रिटेन करता है. Alright, understood. So as I get it, this telephoto sensor has improved the imaging quality. या सर इसका कोई और भी यूज़ है? इसका एक बहुत ही बेहतरीन यूज़ केस है. जब हम अपने कंज्यूमर से मिल रहे थे, हमने उनसे पूछा आपकी मोस्ट ऑफन सीन क्या है, जो ब्यूटीफुल कैप्चर आप अपनी गैलरी में करते हैं वो सीन वो क्या है. निकल कर आया
sunrise sunset moments, those golden moments, and people were struggling to capture those sunrise and sunset moment in its full glory. Consumers के पेन पॉइंट क्या नजर आए हमें? सन इज टू फार, बहुत ही ब्राइट नजर आता है, राइट? एक टाइनी स्पॉट सा नजर आता है जब वो कैप्चर कर लेते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम उनको नजर आई कि सन बहुत ही ब्राइट होता है, इसलिए उसमें ग्लेयर्स आते हैं, बहुत ही नेचुरल सी बात है। तीसरी कंज्यूमर से प्रॉब्लम निकल के आई कि कई बारी जो स्काई है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कलर्स आते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं, राइट? तो हमने इन सब कंज्यूमर पेन पॉइंट्स को सुना और एक फीचर का नाम दिया टेलीफोटो सनशॉट। सब दुनिया के पास पेरिस्कोप है, बट हमने इस पेरिस्कोप को कैसे यूज़ किया, एक टेलीफोटो सनशॉट फीचर बनाया है, जिसमें अब वो जो ग्लोरीफाइड मोमेंट्स हैं आपके सनराइज सनसेट अलग ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकल पाएंगे, क्योंकि हमने कुछ एल्गोरिदम्स के ज़रिए जो उसमें ऑरेंज और रेड टोन्स आती हैं उनको बहुत ही एक्यूरेट कलर के हिसाब से ट्यून किया है। Just to confirm, so as I understand, you are saying that we with X100 have perfected the moment of capturing a sunset and sunrise. Am I right? Absolutely. So while people are struggling to get the moon right, we have gone a notch ahead and actually made our people enabled to capture the sunrise and sunset moments. Great, great. So I can't believe this. That's why I was just confirming. So for all our VBAs, what is the exact technology behind us that helped us build this inbuilt feature? Sure. So it's a combination of hardware and software both. So advanced technology like Zeiss Apo certification. On top of that, there is a floating element design. So Zeiss floating element design क्या करता है? Normally, traditionally जो कैमरा लेंसेज होते हैं वो फिक्स होते हैं, हमारा फ्लोटिंग है। उस फ्लोटिंग से क्या होता है कि जैसे जैसे आप जूम करते हैं इमेज में जो क्वालिटी है वो रिटेन नहीं हो पाती, क्योंकि डीफोकस हो जाता है। बट बिकॉज ऑफ दिस फ्लोटिंग एलिमेंट डिज़ाइन हमारा जो हर जूम के साथ फोकस मेंटेन रहता है। थर्ड टेक्नोलॉजी टी स्टार कोटिंग। पिछली जनरेशन में टी स्टार कोटिंग से हमें काफ़ी फीडबैक आया कि कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इस बार टी स्टार कोटिंग जो है 3 लेयर कोटिंग जो है इसमें एनहांस थिक कर दी गई है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं उसमें जो रिफ्लेक्शन है वो 50% लोअर है। सो Zeiss फ्लोटिंग एलिमेंट डिज़ाइन, Zeiss T-Star कोटिंग एंड टॉप ऑफ दैट Zeiss Apo सर्टिफिकेशन, ये टेक्नोलॉजीज हार्डवेयर की हमने यूज़ करी और इन तीनों टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने अपना वीवो का इमेजिंग इंजन एल्गोरिदम लिखा, जो सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी दोनों को मिलाकर हमने ये ब्यूटीफुल सनराइज सनसेट कैप्चर किया। I am really excited to use X100 and its sunset और sunrise के लिए। But sir, you know, with office छुट्टी बहुत कम मिलती है, तो वेकेशन पे जाना थोड़ा कम ही हो पाता है। So hence, my favorite feature about X90 Pro was the Zeiss 6 style portraits. I mean, इतने सुंदर portraits I have never seen in my life. तो उसमें तो आई एम श्योर कि कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं रहा होगा। वेल यू आर रॉन्ग देयर। ऐसे ही थोड़ी हम X100 सीरीज को नेक्स्ट लेवल ऑफ इमेजिंग बुला रहे हैं। Consumers loves portrait and that's why we did not stop with X90. X100 series we have raised the bar higher. What have we done differently? Zeiss Multifocal Portrait, that's the feature name. What it does, we have got 5 different multifocal lens for consumers to shoot professional level portraits. 24mm, 35mm, 50mm, 85mm, 100mm. And the best part is we have added the Zeiss effects automatically to each of these focal lengths. So for 24mm, that is best for the landscape photography. 35mm is for street photography. 50mm is for all classic portraits, like where you wanted to add those biotar effects, right? 85mm is for face to neck portraits. And 100mm, all those fashion photographers, they love it because those are for the close-up shots where you can actually capture the emotions. Yeah, not only that, this time we have added another feather in our bouquet. We call it as B-Speed, Zeiss B-Speed bouquet. And what it does, it gives unique triangular bouquets at the background, and people can add artistic effects and make a dramatic makeover in their portraits. Okay, that's too impressive. तो एक्चुअली यही मैं बोलना चाहता था कि कैमरा में फीचर्स बहुत होते हैं, बट शायद उसका यूजेज एक कंज्यूमर को समझना बहुत टफ होता है। सो गाइज, आई थिंक इस बार X100 ने सिर्फ कैमरा नहीं, इतनी सारी ऑटोमेटेड और AI के थ्रू कैमरा मैन भी साथ दे दिया है। Right, sir? Right. So we are not calling it as a phone with camera. We are calling it as a camera with the phone. Oh, let's see the results.
Amazing output, sir. I am sure ये output देखने के बाद our VBAs will be super confident about X100 series. Absolutely. I mean ये product तो देखते ही बिकता है यार. So sir, for this next segment, let me introduce you to a superhero. Superhero? What do you mean? So, एक VBA, if he sells 29 units of X90 series within the first month of launch. Really? 29 phones of X90 series in flat 1 month? Yep. I really would like to meet this So superhero. he is our real superhero. Let me introduce you all to Mr. Gurpreet Singh from Delhi VBA team. Welcome Gurpreet. So 29 units of X90 series in a month. Quite an achievement. Tell us, how did you achieve this magic, Gurpreet? टू बी ऑनेस्ट सर, प्रोडक्ट ही इतना अमेजिंग है कि ज़्यादा मेहनत नहीं लगती. प्रोडक्ट सेल करने से पहले कस्टमर की नीड को समझ लो, आधा काम वहीं पे हो जाता है सर. Acha Gurpreet, your X100 series training would have been done by now, right? यस सर. So tell us, in your opinion, how did you like X100 series? How's your experience has been so far? सर दिस इज़ अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट. मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं कि कंज्यूमर को हम बताते बताते शायद थक भी जाएं. ठीक है सर. आप देखिए, अगर बात करें मेरे जो पर्सनल फीचर्स हैं, मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर जाइस मल्टीफोकल पोर्ट्रेट एंड टेलीफोटो सनशॉट, ये मेरे पर्सनल जो हैं बहुत ही अच्छे मुझे लगे इस प्रोडक्ट के अंदर. और हमारे कंज्यूमर को भी ये फीचर बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं. और यही नहीं सर, अगर आप ओवरऑल प्रोडक्ट को देखेंगे, जो इसका लुक एंड डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है. डिस्प्ले इस बार 3000 निट्स की दे रखी है, जो कि काफ़ी ब्राइटर डिस्प्ले है. इंडस्ट्री में इस सेगमेंट में अभी तक कोई फ़ोन दे नहीं रहा था इस डिस्प्ले को. हमने वो किया, हमने 80 LTPO डिस्प्ले इसके अंदर डाली. ठीक है सर. उसके बाद बात करी जाए अगर बैटरी की, तो 5400 mAh की बैटरी एक फ्लैगशिप फोन के अंदर हम डाल रहे हैं. वाटर रेजिस्टेंस डिवाइस है सर. उसके साथ अगर सर आप बात करोगे, जो कैमरा की रिम है वो भी स्टेनलेस स्टील की और बहुत ही अमेजिंग लगती है. जी, आई रियली लाइक योर एंथुसिज्म गुरप्रीत. सो आई एम श्योर X90 के टारगेट इस बार बीट करने वाले हो आप. श्योर सर, आई एम कॉन्फिडेंट. सो गुरप्रीत, आपने बहुत सारी बेहतरीन बातें बताई X100 सीरीज़ के बारे में. क्या आपको अभी भी लगता है कुछ मिसिंग है? यस सर, मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है और मेरे कंज्यूमर्स भी शायद जानते हैं कि कुछ मिसिंग होगा. हमारी प्रीवियस X सीरीज़ के अंदर हम जिम्बल इनबिल्ट देते थे, तो इस बार हमने X सीरीज़ से वो क्यों डिसकंटिन्यू किया? वेरी गुड क्वेश्चन गुरप्रीत. सो यू नो, with every generation we want to enhance our consumer experience, right? And end objective is to give them better output. When it comes to stability, in our last generation we could actually achieve putting 1 inch, the industry leading sensor in our device, right? And that helped us to achieve SEMA 4.0. बट इन एंटायर X100 सीरीज हमें जरूरत ही नहीं है गिम्बल की. हम उस SEMA 4.0 को SEMA 4.5 तक ले गए. और SEMA is a Japanese organization which really defines the stabilization standard for professional cameras. तो अगर आप देखिए कि अगर SEMA 4.0 से 4.5 हम X100 Pro दोनों में लेकर गए हैं, तो स्टेबिलिटी अपने आप इंप्रूव होने वाली है. और यही नहीं, इस बार हमने ऑप्टिकल प्रिसीजन कैलिब्रेशन भी एक नई टेक्नोलॉजी डाली है, जिससे आपकी स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है दोनों X100 और X100 Pro में. थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया. आई होप हमारे VBS जो हैं उनको पूरा क्लैरिफाई हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, और कंज्यूमर को एक्सप्लेन करने में भी उनको काफ़ी मदद मिलेगी इसके थ्रू. सो गुरप्रीत जी, अब आपका टारगेट हमने फिर 100 कर दिया X100 सीरीज़ का. सर इस बार 200 के लिए ट्राई करूँगा. आई एम कॉन्फिडेंट. I really like your confident Gurpreet. So all the best for your future and your life. थैंक यू सो मच सर, इट्स माय प्लेजर. Pleasure is all mine. Till where will I go for my art? Looking for the perfect muse. The artist's mind always goes back to where the journey began, to turn my imagination into art. Now with the vivo X100 series, perhaps you can too. Next level of imaging. vivo X100 series. Extreme imagination. Vivo. What an insightful discussion you just had with Gurpreet sir. मेरी तो आंखें खुल रही है सब सुन के. Okay sir, I think we have established कि स्मार्टफोन कैमरा के मामले में तो X100 का कोई मुकाबला नहीं है. But I think a phone is much more than its camera, right? So sir, how does X100 series fare in terms of the performance and its configuration? Sure. So X100 series is a performance beast with a lot of advanced technologies and breakthroughs. So to start with, the entire X100 series is now India's first MediaTek Dimensity 9300 flagship. So that's the latest of the lot, and both X100 and X100 Pro are loaded with
MediaTek Dimensity 9300. Talking about its display, the entire X100 series is now upgraded with 8T LTPO eye protection display. Now 8T helps in enhancing the smoother experience when you scroll the screen, right? And it actually makes the phone much more brighter, much more smoother, and even eye friendly. That was about display. Talking about battery, even in X100 Pro, we have taken a massive jump in terms of its battery chemistry when it compares to the last generation. So for example, X100 Pro, from 5000 we have gone to 5400 mAh battery. Talking about X100 is now featuring the 120 watt flash charge support. So which, these are some of the breakthrough which we have enhanced in the X100 performance section. Okay, Vikas. So you mentioned about this processor, MediaTek Dimensity 9300, right? So as far as I know, and I think it is true, processor की ज़रूरत एक advanced gaming में use होती है. No, that's where you and most of us actually go wrong. A flagship processor is required in imaging as well, and that's where in X100 series we are using MediaTek Dimensity 9300 flagship along with our own imaging V3 chipset. People feel that performance and flagship processor are required just for gaming. That's true, but in imaging also. How? Because when it comes to us, Vivo as a company, our expectation for imaging is so high that one chip was not able to suffice the purpose. That's why we are using two flagship chipset. While Dimensity 9300 provides the real-time dedicated support for imaging algorithm, V3 enables 4K cinematic portrait video. I am so glad that we are doing this. I mean, मुझे लग रहा है मुझे तो फ़ोन के बारे में जैसे कुछ पता ही नहीं था, and I'm learning so much from this interview, and I'm sure our VBAs are also learning this alongside me. So, Vikas, thank you so much that you have explained every nitty-gritty of X100 series in so much detail and such beautiful words. But आपका थोड़ा सा time और लेना चाहूँगा if you permit. Sure. For this next segment, we have another VBA who is joining us virtually. To introduce her, she is an amazing personality, an inspirational person, and I had a personal pleasure of meeting her in the Dream Journey 2023 in Istanbul. She has been our top VBA for the past 2 years. So it's Miss SEMA from West Bengal. Hi Jivesh, how are you? I am really glad to be part of the X100 podcast. Thank you for having me over. Okay, SEMA. So I have Mr. Vikas. I think you already know him very well because आप 2 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं and he has been this constant great figure among us. So he is with me and we are discussing about X100. Do you have any questions about X100 series for him? Hi Vikas sir, it's a pleasure to meet you firstly. I just want to tell you that I have already received 4 pre-booking for X100 series in just 48 hours. So I think it speaks volumes how the great product is. That's amazing, Seema. Congratulations. Thank you so much, sir. Okay, so I have one question. A lot of customers ask me about MediaTek and Snapdragon comparison. Can you tell me little more in details how well MediaTek 9300 fare against the competition? Seema, you must be aware about N2 benchmark scores, right? Yes, it lets you benchmark the performance of your device. So let me tell you, Dimensity 9300 processor in X100 series reaches an unbelievable more than 2.21 million N2 score. This places it at the top amongst the top flagship processors. Thank you for answering my query, sir. I have one more question. इस बार X100 Pro में बैटरी की कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया है, लाइक 5400 mAh के बैटरी बैकअप है. सो इस रीजन की वजह से फोन की थिकनेस के ऊपर में किसी भी तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है सर? That's a good one, Seema. We have increased the battery capacity, yes, but at the same time the energy density is also increased by 8.3%. Hence, the thickness of the phone is not impacted. Rather, the X100 Pro is much slimmer than X90 Pro. I hope this answers your question, Seema. Thank you so much for joining us and this lovely question. I'm sure ये काफ़ी educational रहा होगा काफ़ी VBAs के लिए. So I wish you a very happy new year and a truckload of success with X100 series and your personal life as well. Thank you so much. Thank you having me.
Happy New Year to you too and the entire Vivo family. Thank you. What a great session it has been, Vikas. So this brings us to our closing segment now. And since we are a consumer-centric company, we always have that user-centric approach. So why not to have a customer voice segment as well? Sure. I have a few customers who have already experienced the X series and have also expressed their interest in buying the new X100 devices as well. So joining us is Mr. Ashu Rawat from Delhi. Hi Ashu, how are you? Hey Jeeves, thank you very much, brother. And I'm glad to be a part of your this episode. So I've heard that you have experienced X series personally as well. So Ashu, tell me, आपका experience कैसा रहा है? And yeah, I have been using X series from a very long time. So before I had X30, X50 और अब X60 के साथ हूँ मैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसके साथ मेरा. सो इट्स काइंड ऑफ माई ट्रैवल बडी. तो कहीं पे भी जाना होता है, चाहे काम से हो या मतलब वेकेशंस पे हो, कहीं पे भी हो, तो इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. बहुत यूज़र फ्रेंडली है फ़ोन और डिसेंट है. सारे मोड्स अच्छे हैं इसके और साउंड सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है. ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है X60 के साथ मेरा. Good to hear, Ashu. Tell us what's your take on the new X100 series? Yeah. Now पता चला मुझे. Now I came to know about X100. कुछ नया आने वाला है. तो कुछ एड्स देखे हैं मैंने और कुछ मतलब लग रहा है कि कुछ धमाका मचने वाला है. तो देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि कुछ सुना है कि जो उसका साउंड सिस्टम है वो बहुत ही अनरियल है एंड पोर्ट्रेट मोड उसका काफ़ी अच्छा है. DSLR ही दे दिया मतलब इस बार तो सेल फोन के अंदर. और क्या बताऊँ, टेलीफोटो सनशॉट हो गया उसका काफ़ी अच्छा है. और आपका जो जूम दिया गया है वो अमेजिंग है. 100x जूम बहुत होता है यार. अब देखते हैं क्या होता है उसके साथ. Thank you so much Ashu for sharing your experience. I hope that you get your hands on X100 series very soon and stay a part of the Vivo family for years to come. Thank you. Next up, we have another customer. This time we have a lovely lady from Gurgaon. Preeti, how are you? What's up? Divesh, I'm doing great. I was little occupied in Christmas and New Year celebration. And on top of that, I had lot of work in office. But I have a planned trip to Northeast in mid of January. So I'm really looking forward to it. Hi Preeti. I heard you have expressed your interest in the new X100 series. Which feature excites you the most? No, not just interest. I have already pre-booked the X100 Pro phone and honestly best feature pick करना तो tough है, but all the features of this phone sound so amazing. And as I have told you that I have a planned trip to Northeast, so I'm really excited to explore all the features and especially telephoto sunshot mode and landscape portrait. Superb. Have a great time on your vacation, Preeti. Do create some wonderful moments and lovely clicks for all of us to see. Thank you so much for joining us. Thank you for having me. Goodbye. It was thoroughly enjoyable and very informative for me, Vikas. Thank you so much for taking out the time. Now that we have heard from the mastermind, that's you, we have heard from our VBAs, the superheroes, and we have heard from the ultimate king, the customers. Now Vikas, closing statement. Well, Jivesh, it was lovely interacting with you as always. To my dear VBAs, lot of efforts have gone into making X100 series the next level of imaging. Let's not leave any stone unturned to take X100 series to the newer heights. All the best. Well, you have heard from the expert. I have nothing more to add. But do let us know, what do you think about today's episode that covered the X100 series in all its glory? Do share your thoughts in the comment section and all the best for the sales period. Happy New Year to you and your family.